Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, we are discussing the animal kingdom and today we are going to discuss about this topic, that is class Chondrichthyes. We know that the phylum Chordata is subdivided into three groups, out of which we are discussing the vertebrata subphylum, and this vertebrata subphylum is divided into the two divisions, that is Ornithostomata and Nithostomata. तो हम इसी क्लासिफिकेशंस को आगे बढ़ा रहे हैं. Vertebrata, this vertebrata subphylum is divided into the two divisions. One is the Ornithostomata or Ornitha, and the another one is the Nithostomata. Nithostomata. These are the jaw bearing. Zo यहाँ पे zo present नहीं होता mouth में, but they have zo, so they are Nithostomata. And these division Nithostomatas further divided into the two super classes. इसे हमने further divide किया था two super classes के अंदर. The first one is the Pisces. The Pisces, in which we include all the fishes, and the another super class is the Tetrapoda. Tetrapoda. I am repeating this classification again so that you can keep remember this. Okay, it's very important. तो इसे बार बार आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा ताकि ये आपको याद रहे. This Pisces super class is further divided into the two classes. इसे हम फिर two classes में divide कर रहे हैं. That first one, यहाँ पे हम लिख देते हैं the class. The first class is the Chondrichthyes, and the another one is Osteophytes. So these are the two classes of the superclass Pisces, and or fishes. We can include these fishes also. So fishes are of two types. First one, that is the Chondrichthyes. These are the fishes which are also called as cartilaginous fishes, and we will discuss about these cartilaginous fishes first of all, and later on we'll discuss about these fishes, Osteophytes or the bony fishes, in which the skeleton is made up of bones. So let's start our discussion with the Chondrichthyes. These Chondrichthyes, as the names indicate, these fishes are the cartilaginous skeleton. So they have endoskeleton which is made up of cartilage. So first point we can write that endoskeleton is made up of cartilage. तो cartilage का बना हुआ endoskeleton है. That's why they are called as Chondrichthyes. और नेक्स्ट बात, अगर हम बात करें इनके हैबिटेट के बारे में, these are the fishes which are marine. They only found into the sea water. They are marine fishes. They found in the sea water, and these fishes are the predaceous, or we can say that these are the predator. ये जो फिशेस होती हैं ये प्रीडेटर होती हैं जो दूसरों का शिकार करती हैं, अटैक करेंगी, शिकार करके अपना खाना ढूंढेंगी. सो दीज आर दी predaceous, and for this they have the special structure also. Some fishes like they have the electric organ also. कुछ fishes ऐसी हैं जिनमें electric organ है जिसे टच करने से predator जो भी उनका prey होगा वो उससे करंट लग सकता है, या जो भी उनके कांटेक्ट में आएगा उसे एक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं. Example of such kind of fish is torpedo. So torpedo is the fish which has the electric organ, जिसमें electric organ होते हैं. And the another example of is trigon. That is a fish that has the poisonous sting. इसमें poisonous sting होते ही poison release कर सकती है, and this is just for their predator nature, ताकि ये आसानी से शिकार कर सके. तो ये कुछ स्पेशल हमने एग्जांपल देखे हैं प्रीडेशियस तरीके की फिशेस के बारे में जो अटैक करके अपना शिकार कर रही हैं. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू देयर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट दे हैव नोटोकॉर्ड. इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं. नोटोकॉर्ड इज structure which remain throughout the life. तो नोटोकॉर्ड is present or persist throughout the life. पूरी लाइफ तक इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी. This is important feature because they are the chordates and they have the notochord, and this notochord remain persist throughout the life. इनके अगर हम स्किन की बात करें, these fishes they have the scales. फिशेस हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. स्केल्स क्या होते हैं?
इनके स्किन के ऊपर जो कवरिंग हम देखते हैं, दीज आर द स्केल्स। और स्केल का काम क्या है कि वाटर में रहती है, नेचुरल सी बात है, फिश है वाटर में रहेगी, तो वाटर में रहते हुए इनकी स्किन खराब ना हो, ये वाटर का जो एंट्री और एग्जिट है बॉडी से, उस चीज को कंट्रोल कर सके, दैट फंक्शन इज डन बाय देयर स्केल्स। सो दे हैव स्केल्स एंड दे हैव टफ, इनकी टफ स्किन होती है, दे हैव टफ स्किन विच इज कंटेनिंग सम माइन्यूट स्केल्स and these scales are known as placoid scales. They have placoid scales. हम आगे और जब बाकी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि और भी तरीके के स्केल्स होते हैं, ग्रेनॉइड स्केल्स होते हैं, क्रिटोइड स्केल्स होते हैं, इस तरीके के बहुत तरीके के स्केल्स की टाइप्स प्रेजेंट है, बट दे हैव placoid scales. And these placoids are minute scales which are present on their skin, and these placoid scales are in dermal origin. Dermal origin के होते हैं. Now let's come on to about the appendages. अगर हम इनके appendages की बात करें, जो extra organs हैं that present in this, the appendages. In the appendages we can include the fins. They have fins. इसमें सभी तरीके के fins present हैं. They have dorsal fin, they have ventral fin, they have caudal fin, and they have pectoral fin also. So they have fins. Fins are present in these fishes. And the special thing which we have to keep remember here, जो important चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, about their pectoral fin. Their pectoral fin has some special structure which is known as claspers. इन्हें हम बोलते हैं claspers. Claspers. And these claspers are very important. These are the copulatory organ. जब भी इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है, एंड रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो अपोजिट्स जो स्ट्रक्चर होगी, मीन्स अपोजिट सेक्स होगा या फीमेल फिश जो होगी, उसे पास लाने के या उसे अटैच करने के लिए कॉपुलेशन के टाइम पे जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, दैट इज क्लास्पर्स, एंड दीज क्लास्पर्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल फिन. तो ये पेक्टोरल फिन में ही मिलती हैं. ओके. एंड caudal fin की अगर हम बात करें, that caudal fin, they have caudal fin also, and this caudal fin is heterocircle. ये heterocircle होता है. heterocircle का मतलब है कि यहाँ पे जो सिमेट्री है इस फिन की वो इक्वल नहीं होती, कहीं पे ब्रॉड होगा, कहीं पे नैरो होगा. So the caudal fins are heterocircle in origin. heterocircle का मीनिंग याद रखिएगा, means asymmetrical. तो asymmetry है, इक्वली साइज का कॉर्डल फिन प्रेजेंट नहीं है. इसके अलावा डोर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, एंड दीज फिन्स पेक्टोरल एंड कॉर्डल फिन्स आर आल्सो फाउंड. सो दिस इज अबाउट देयर अपेंडेजेस और अबाउट देयर फिन्स. ये हुई फिन के बारे में बात. अब हम बात करेंगे इनके रेस्पिरेशन के बारे में. द रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दे हैव. द रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर प्रेजेंट है गिल्स. दे हैव गिल्स एंड द गिल स्लिट्स आर सेपरेट. दे हैव गिल्स इन देयर बॉडी. गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा. गिल्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं. अगर आप याद रख सके, सो कीप इट रिमेंबर. गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रेंकियल, और अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो उसे क्यूटेशियस रेस्पिरेशन बोलेंगे. तो दे डू ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे डू ब्रेंकियल respiration because they are doing respiration through their gills, and such type of respiration is known as bronchial respiration. They have gills and the gill slits are also found. Now most important things, their gill slits or their gill slits are separate, and these gills are not covered by the gill cover. यानी कि जो इनके गिल कवर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओपरकुलम. These operculum is absent or is not found in these fishes. Operculum present नहीं होता. This is the gill cover which covers the gills, but this structure is not found in this these cartilaginous fishes. इनके अंदर ये structure present नहीं है. We will discuss about the osteotheks also or bony fishes, in which we will study that वहां पे operculum present होगा. आपको दोनों तरीके की फिशेस के डिफरेंसेस भी करने हैं, तो साथ के साथ अगर आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं कि कौन से डिफरेंसेस ऐसे हैं जो दोनों फिशेस में आप नोट कर सकते हैं. सो मेक अ टेबल अबाउट द डिफरेंसेस आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग द बोनी फिशेस. So this is one difference we can include, that they do not have operculum, but in the bony fishes we will found that the gills are covered by the gill covers or the operculum, but they do not have this structure. यहाँ पे ये structure present
नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज फिशेस, अगर बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दीज फिशेस आर वेरी वेल डेवलप्ड टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। माउथ इज द वेंट्रली लोकेटेड माउथ। वैसे जनरली अगर आप देखो ना तो जो फिशेस में माउथ होते हैं वो टर्मिनल होते हैं, यानी कि एंड पे प्रेजेंट होते हैं, बट दे हैव वेंट्रली लोकेटेड माउथ की जो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। अगर हम बॉडी की बात करें, सपोज इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, दैट इज द फिश, तो जो माउथ होगा वो यहां प्रेजेंट है। दिस इज द माउथ विच इज वेंट्रली लोकेटेड माउथ। सो वी कैन से दैट माउथ इज ऑन वेंट्रल लोकेशन। नीचे की तरफ माउथ होता है जिसे हम कह रहे हैं कि वेंट्रल लोकेशन पे माउथ है। जो की अगर बात करें, दे हैव वेल डेवलप्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेल डेवलप्ड जो है। इसके अलावा इनकी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है। दे हैव सम स्क्रोल valve like structure, and these scroll valves help to increase the surface area for the absorption. तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो यहाँ इन फिशेस में देखने को मिलेगी, एंड दीज आर दी फॉर दी अब्जॉर्प्शन को एरिया इंक्रीज करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाली स्ट्रक्चर है, दैट इज स्क्रोल वॉल विच आर फाउंड इन देयर स्ट्रक्चर. नाउ माउथ इज देयर एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन आउटसाइड थ्रू अ chamber or through a pore that is known as cloaca. They have cloaca, that is also important thing. Cloaca, they have cloaca. अब cloaca क्या होता है? Cloaca is the common opening for the digestive system, excretory system and reproductive system. तीनों की एक ही ओपनिंग अगर प्रेजेंट हो उस स्ट्रक्चर को हम क्लोएका बोलते हैं. सो दे हैव क्लोएका. तो यहां से इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन होगा और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी के थ्रू ओपन होगा. सो क्लोएका इज प्रेजेंट देयर. नाउ अगर हम इसकी बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सो दे हैव किडनी एंड द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज द यूरिया. यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये यूरिया एक्सक्रीट करेंगे. These fishes, these chondrichthyes fishes have one important structure that they do not have air bladders. इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता. तो एक और हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, एयर ब्लैडर और द स्विम ब्लैडर. और स्विम ब्लैडर्स is absent. That structure which is filled by with air, जो एयर से फिल्ड रहने वाला एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है, उनका एक बैलेंस बना के रखता है वाटर के अंदर. सो दे डू नॉट हैव एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर. दैट्स व्हाई दे हैव टू कंटिन्यूअसली मींस स्विम टू कीप कांस्टेंट इनटू द वाटर. वाटर में रहने के लिए उन्हें कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता है. सो दे डू नॉट हैव एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर. So they have to continuously swim to avoid the sinking. This structure is not present in these cartilaginous fish. That is another important difference between bony fishes and cartilaginous fishes. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. These fishes are the cold-blooded fishes. They are cold-blooded. Cold-blooded क्या होते हैं? और poikilotherms. The important term जो हम use कर सकते हैं that is poikilotherm. So these are the poikilothermal animals. इस चीज का मतलब यह है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है, वो एक कांस्टेंट नहीं रहता. लाइक हम अपने केसेस में बात करें, द मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स in which they have the constant body temperature, but in these animals the body temperature vary with the environmental situation. Change hota rahega body temperature, and that's why they are known as cold blooded or poikilothermic or animals. Now let's talk about their nervous system. अगर nervous system है, they have a normal developed nervous system present है. Cranial nerves, the important thing that is the cranial nerves. They have 10 pairs cranial nerves. हम ह्यूमन में जब मैमल्स में जब हम पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि cranial nerves जो होते हैं हमारी बॉडी में, in human being we have 12 pairs cranial nerves, but in these fishes they have 10 pairs cranial nerves. क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं? जो ब्रेन से निकलती हैं, उन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. सो दे हैव 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम, they have heart
and the heart is a two-chambered structure. In these fishes, the heart is two-chambered. और जब two-chambered होता है तो कौन कौन से chamber होंगे? One auricle and one ventricle. So they have two-chambered heart, one auricle, and the another one is ventricle. This type of heart only pumps the deoxygenated blood. इस तरीके का हार्ट जहां पे प्रेजेंट होता है ये सिर्फ deoxygenated blood ही ट्रांसपोर्ट करेगा. RBCs are also formed. RBCs, and these RBCs are oval and nucleated RBCs. They have oval and nucleated RBCs. They have. So this is about circulatory system. Now let's come on to their reproductive system. Reproductive system में हम कह सकते हैं they have different sex or sexes are separate. Reproductive system. Sexes are separate. जैसे कि हमने देखा था कि जिनका pelvic fin थे वहां पे claspers प्रेजेंट थे तो claspers प्रेजेंट होंगे मेल फिशेस के अंदर. तो एक तरीके से सेपरेशन हुआ है जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल फिशेस को. सो सेक्सेस आर सेपरेट. Sexes separate and the fertilization is internal fertilization. They have internal fertilization. Fertilization internal and जो development होता है वो direct. They have direct development. These fishes can be oviparous, viviparous or ovoviviparous. Most of the cases viviparous can be, we can see, but both all these three types of fishes can be found. Oviparous which lays eggs, viviparous which lays the living beings, यानी कि एक living beings को living individual को birth दे रही है तो हम viviparous कहेंगे. In ovoviviparous we can say that egg is fertilized inside the female body and this fertilized egg is then laid out through the female body for the female fishes. So they have all three kind of condition: oviparous, viviparous and ovoviviparous. So this is all about these fishes. These cartilaginous fishes. Important thing जो हमने यहाँ पे discuss की है about their scales. They have placoid scales. They have laterally situated mouth. Jaw is very well developed jaw. They have in their intestine they have scroll wall to increase the absorption area. Air bladders are not found in these fishes and gills are not covered by the operculum. That is also very important. They have common opening for the cloaca. Cloaca एक common opening होगी जिसके through reproductive system, digestive system और excretory system तीनों direct बाहर की तरफ open होंगे. That is cloaca. So they have cloaca and they have two-chambered heart, one auricle, another one is the ventricle, and these hearts supplies only the deoxygenated blood. RBCs are oval and nucleated. यहाँ पे हमने देखा है nucleated RBCs present हैं. जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि enucleated RBCs भी होती हैं. Like in case of human being, we have enucleated RBCs जहाँ पे nucleus present नहीं रहता. So this is all about the important structure. Swim bladder or air bladder, that is also very important. जो आपको याद रखना है. They do not have swim bladder. For this they have to constantly swim to avoid the shrinking. And they are cold-blooded fishes. So that's all about the characteristics of these.